टोटल बोर्ड विजुअल लाइन लेंथ जरूर नहीं है. गुड इवनिंग स्टूडेंट्स. गुड इवनिंग. Am I audible? Yes, yes, full. ठीक है. Okay. Yes. नया चैप्टर है. I think last chapter chemical coordination and integration is completed. So today we have to discuss the new chapter biomolecules. क्या है? Biomolecules. Biomolecules. So NEET examination में from this chapter, so 3 to 4 or 2 to 3 questions may be asked from this chapter, biomolecule chapter. So biomolecules, here you know, if you take any living organism, the living organism consists of matter, so made up of different types of elements and compounds. So if you take any living organism from the smaller to larger one, the body is made up of different types of elements and compounds. So the elements and compounds which are found in the protoplasm of the cell are known as biomolecules. So protoplasm में there are two types of biomolecules. Means the biomolecules are maybe either organic molecules or maybe inorganic molecules. Okay. So either if you take one cell, so cell का अंदर cellular pool है. So cellular pool means, so the various chemicals which are found in the cell is called cellular pool. So cellular pool always existed as a crystalline colloid. So crystal forms में existed होता है. So that cellular pool divides into two types. One is aqueous cellular pool, another one is non-aqueous cellular pool. So इसमें पहले biomolecules में पहले all living organisms are composed of matter. Okay, so made up of elements and compounds. Made of elements and compounds. ठीक है बेटा, elements and compounds. So these elements and compounds which are present in the protoplasm of the cell are known as क्या है? Biomolecules. So biomolecules means here
the molecules found in the molecules found in the protoplasm of cell are called क्या है बायोमॉलिक्यूल्स सो इधर क्या है प्रोटोप्लाज्म is a complex mixture of protoplasm is a complex mixture of क्या है both organic and inorganic compounds. So देखिए, so what are the molecules found in the protoplasm of the cell? So those molecules commonly called क्या है biomolecules. So protoplasm में is the complex mixture of क्या है both organic and inorganic compounds है, both organic and inorganic compounds. ठीक है. Next, cellular pool. So what is the cellular pool? So cellular pool means क्या है the collection of various type of molecules in a cell is called cellular pool. So what is the cellular pool? Cellular pool is the collection of various type of molecules है क्या है collection of various type of molecules. ठीक है बेटा, various type of molecules. So the collection of various type of molecules within the cell, that is considered as क्या है cellular pool. So that cellular pool, it is exists as a crystallized crystallocolloid. कैसे एग्जिस्ट हो रहा है ये सेलुलर पूल में? क्रिस्टलोकोलॉइड, स्मॉल क्रिस्टल जैसे कोलाइड सब्सटेंस में एग्जिस्ट हो रहे हैं मॉलिक्यूल्स. सो नाउ द सेलुलर पूल comprises more than 500 compounds, chemical compounds. You know फर्स्ट ईयर में लिविंग वर्ल्ड में मेटाबॉलिज्म में डिस्कस थे. सो मेटाबॉलिज्म में क्या है, each and every living organism body is made up of different types of chemical compounds. So these chemical compounds are differ in their shape, structure, chemical nature, function, है ना. So each and every living organism में more than 5,000 different types of chemical compounds or chemical reactions okay occur. So अभी cellular pool में it comprises more than कितना 5,000 different chemical compounds. It comprises more than
5000 different chemical compounds है, ठीक है. So now the cellular fluid can be divided into two types. One is aqueous cellular pool. ये two types है, aqueous and non-aqueous. Aqueous pool and non-aqueous pool, ठीक है. Aqueous pool, non-aqueous pool. So aqueous pool में क्या इंक्लूड किया, non-aqueous pool में क्या इंक्लूड किया. So aqueous fluid में क्या है, include substance which are dissolved in the water. So water में क्या क्या केमिकल कंपाउंड्स डिसॉल्व होता है, वो सब इंक्लूडिंग अंडर एक्वियस पूल. सो इसमें नॉन एक्वियस पूल में क्या इंक्लूड किया, विच आर नॉट डिसॉल्व्ड इन द वाटर, मींस थोड़ा लार्ज साइज कंपाउंड्स इंक्लूडिंग अंडर नॉन एक्वियस पूल. मींस ये डिसॉल्व होता है सेलुलर पार्ट से. includes substances dissolved in water. ठीक है बेटा, क्या इंक्लूड किया, includes substances dissolved in water. इसमें क्या है, includes substances which are part of cellular structures. Parts of cellular structures. So non-aqueous pool में cellular parts include किया, but aqueous pool में so the substance so which are dissolved in the water. So इसमें क्या है, like glucose, amino acids, example like glucose, amino acids. So non-aqueous pool में means they are not dissolved in the water, like phospholipids. ठीक है बेटा. So cellular pool में either water dissolved substances and water are insoluble in water substances. Water soluble substances like glucose and amino acids, insoluble in water like phospholipids are in. So phospholipids belongs to non-aqueous pool and glucose and amino acids are aqueous pool. ठीक है बेटा, clear? Any doubt? Okay, shall I rub it? Crystallocolloid means crystals, rock जैसे छोटा छोटा small sized rock crystals है. Okay. आपका डाउट क्या है सुभाषिस पाड़ी?
ठीक है. Okay, shall I repeat? So next, so now, so next one क्या है? So analysis of different types of compounds or elements in living tissue means if you analysis the living tissue or living matter, like if you take any either vegetable matter or animal matter or microbial paste. So let us assume or analyze the chemical compounds or elements in the living matter. So what are the elements occur in living matter? So either organic or inorganic. So at the same time, if you take the non-living matter, so for example, if you take one piece of the earth crust, so let us analyze the different elements or compounds in the non-living matter, for example, earth crust. So let us compare the living and non-living matters. So what are the different types of elements in living and non-living? So इधर क्या है? There is no different elements in the living and non-living. So both living and non-living matter shows similar type of elements and similar, okay, both living and non-living matter, okay, so similar type of elements like carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, sulfur and several other chemical compounds or elements, but varies in their content or varies in their content per unit unit of matter. So unit of matter में living and non-living में, okay, composition is same but unit matter में क्या होगा? Difference हो रहा है. So ratio percentage of carbon or percentage of hydrogen or percentage of oxygen or nitrogen. So unit matter में क्या होगा? Either living में more है तो non living में less हो रहा है, और some elements living में more है तो non living में less, some elements non living में more होता है, living में less हो रहा है. So that is the only difference, but both living and non living matter shows similar type of elements. So let us see the comparison of means what are the elements in living and non-living. So what are the percentage in per unit? Okay, both living and non-living. आपका NCERT में एक टेबलर फॉर्म भी मेंशन किया, living and non-living. Comparison of elements in living and non-living matter. Reading visible है ना? Okay. So इधर क्या है? Elements.
elements, percentage of weight of, percentage of weight of, one is earth crust और एक क्या है ह्यूमन बॉडी. सो देखिए ह्यूमन बॉडी इट इज रिलेटेड मीन्स लिविंग मैटर. ठीक है बेटा, एक क्या है लिविंग मैटर. अर्थ क्रस्ट इज द नॉन लिविंग मैटर, नॉन लिविंग matter. So what are the elements in living and non-living? The percentage of hydrogen, carbon, oxygen, nitrogen, sulfur, sodium, calcium, magnesium, and silica. So देखिए the comparison of elements present in non-living and living matter. So हम लोग if you means take
a piece of crust, earth crust, that is the non-living matter, or the piece of the human body, okay, either vegetable और माइक्रोबियल पेस्ट। सो इसमें लिविंग मैटर में ह्यूमन बॉडी रिलेटेड थी। सो observe the different types of elements in earth crust and human body, that means living matter, in both matters, okay, living and non-living matters में similar type of elements are present। क्या है? Similar type of elements like hydrogen, carbon, oxygen, nitrogen, sulfur, sodium, calcium, magnesium, and silicon. So here the percentage of all these elements differ in living and non-living, particular per unit matter में। so एक compounds का और elements का weight percentage कितना है, just change हो रहा है, but similar type of elements present in both living and non-living। So in non-living में very little है, not mentioned, okay। So these are not accurate values, approximate values है, समझे ना? ये क्या है? ये approximate values, not accurate values, ठीक है? approximate values है, accurate values नहीं है। So इसमें देखिए, here अर्थ में very little element क्या है? नाइट्रोजन। So ये पूछ रहा है बिट में which of the following element is very little in non-living matter, ये पूछ रहा है, important, ठीक है? नाइट्रोजन। So human body क्या रहे हैं? Which of the following element is negligible in living matter or human body? ये important है। क्या है? सिलिकॉन, ठीक है बेटा? Silicon is the negligible element in human body and earth crust में very little क्या है? नाइट्रोजन है। So ये टेबुलर फॉर्म रिलेटेड बिट कैसे पूछ रहे हैं, देखिए ascending order of main elements है, okay, like hydrogen, carbon, oxygen, nitrogen, sulfur and phosphorus। So इधर देखिए परसेंटेज। So in living matter highest percentage क्या है? ऑक्सीजन एंड कार्बन है। So देखिए in compare between living and non-living, in comparison between living and non-living, so carbon, oxygen and hydrogen are more in the living than the non-living matter, ठीक है बेटा? समझे ना? देखिए in compared to living and non-living matter, so what are the elements more in living matter? Oxygen, carbon and hydrogen elements are more than the non-living matter, ठीक है? इसमें बिट्स कैसे पूछ रहे हैं? रिमेंबर, सो ascending order of different types of elements in living matter and non-living matter। आपका एनसीईआरटी में है ये टेबुलर फॉर्म, ठीक है बेटा? सो एज पर एनसीईआरटी आप लोग याद रखना जरूर है। याद रखना मीन्स इधर क्या है? वेरी लिटिल एंड नेग्लिजिबल, अनदर दो बिट्स लिखा है। अब
Shall I repeat? So, so देखिए, descending order of descending order of, इधर ये दो बिट याद रखिए. ओके, नेक्स्ट, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स, descending order of elements in living matter, in living matter क्या है? हाईएस्ट ऑक्सीजन, oxygen greater than carbon, greater than nitrogen, greater than calcium, greater than hydrogen. ठीक है बेटा? सो ये 5 याद रखिए. डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इन लिविंग मैटर, ऑक्सीजन कितना है? 65, कार्बन 18.5, नाइट्रोजन 3.3, कैल्शियम 1.5, हाइड्रोजन 0.5. ठीक है. नेक्स्ट, इसमें सेकेंड बिट देखिए, डिसेंडिंग order of elements in non-living में देखिए, पहले ऑक्सीजन, देन सिलिकॉन, देन कैल्शियम, then sodium, then magnesium, then hydrogen. ठीक है बेटा? देखिए 46.6 ऑक्सीजन है, सिलिकॉन 27.7, कैल्शियम 3.6, नेक्स्ट सोडियम यानी सोडियम 2.8, then magnesium 2.1, हाइड्रोजन 0.14. ये याद रखिए. सो बिट में पूछने के लिए चांसेस है. ठीक है, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर है. ठीक है बेटा? either descending or ascending order. So out दो bits क्या है? Little elements in earth crust, negligible element in living matter. ये दोनों clear? Next,
So next one, methods to analyze chemical composition. Methods to analyze chemical composition. So देखिए, protoplasm may contain either organic and inorganic compounds. So within the protoplasm or cellular core, so what type of organic compounds and what type of inorganic compounds present in the cellular core? So how to find out or identify these organic and inorganic compounds separately? So ये दोनों organic and inorganic compounds identification के लिए दो different types of tests. One is TCA test, that is the trichloroacetic acid test. Another one is S test. So TCA test for identified means to identify the organic compounds, and S test to identify inorganic compounds. Though different types of tests. One is TCA test. For what purpose? To identify organic compounds. Organic compounds. Second one क्या है? Gas test. To identify inorganic compounds. So cell में means living matter में what are the different types of inorganic compounds and what are the different types of organic compounds? So how to find out these organic and inorganic compounds? By two tests. One is TCA trichloroacetic acid test, another one is AS test. So पहले TCA test देखिए, TCA test. So इसमें क्या है? We can take a vegetable matter, means vegetable piece or animal piece or microbial paste, any living matter, either vegetable matter or non-vegetable, means animal matter. So पहले क्या करना? We can take living matter, so देखिए, to take living matter, so that living matter क्या है? Either vegetable or animal matter. Then ये क्या करना? So this living matter put in mortar and ground by the pistol. Living matter put in a mortar and ground with a pestle. So अभी ग्राइंड करने से क्या होगा? To form the thick slurry. For example, देखिए इधर ये वाला मोटर है, आयुर्वेदिक में, और हमारा घर में क्या है? जिंजर एंड गार्लिक ग्राइंड करते हैं ना, बाउल जैसे, ये वाला मोटर है, उसमें क्या है? स्मॉल
पिस्टल है। ठीक है बेटा, पहले इसका मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन टेक लिविंग मैटर इनटू द मोटर, ये क्या है, पेस्टल। सो इसका अंदर डाल के थोरोली ग्राइंड करना जरूर, मीन्स पीस पीस करने के बाद देन अगेन ऐड ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। बाद में क्या करना, ऐड TCA मीन्स ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। TCA मीन्स क्या है, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। सो दैट इज CCl3COOH, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, ओके, इनटू इट। सो इसमें अभी ट्राइक्लोरो TCA ऐड करने से, अभी क्या होगा, थिक स्लरी जूसी मीन्स जूस जैसे फॉर्मेशन हो रहा है। क्या फॉर्मेशन हो रहा है, टू मेक ए स्लरी मीन्स सूप जैसे फॉर्मेशन हो रहा है। ओके, अभी क्या है, स्लरी मीन्स क्या है, व्हाट इज द स्लरी, जूस जैसे। सो नाउ दिस स्लरी नेक्स्ट क्या करना, फिल्टर्ड, क्या करना बेटा, फिल्टर्ड by using of cheese cloth or cotton cloth। cheese cloth or cotton cloth। So by using a cheese cloth or cotton cloth, filtered by using or filtered through लिखिए, filtered through cheese cloth और cotton cloth है। So अभी filtration होगा, ये filtered दो fractions forms two fractions। फिल्टर करने से क्या होगा, two fractions फॉर्मेशन हो रहे हैं। वन इज soluble, अनदर वन इज insoluble। ये दो फ्रैक्शंस क्या है, फिल्ट्रेट एंड रिटेंटेड बोल रहे हैं, फिल्ट्रेट एंड रिटेंटेड। सो देख, अभी ये क्या करना, हम लेंगे एक ट्यूब लेंगे, ओके, इसका ऊपर फनल डाल के, ये क्या है, ये फनल है, ठीक है, ये फनल है, ठीक है बेटा, ये फनल है। सो उसमें क्या है, चीज क्लॉथ, इसमें क्या है, चीज क्लॉथ है और कॉटन क्लॉथ। इसमें क्या है, टोटल फिल्ट्रेट स्लरी डाल दिए। सो स्लरी में ऐसे फिल्ट्रेट आके, ठीक है, ड्रॉप बाय ड्रॉप लिक्विड फॉर्मेशन, ठीक है, टेस्ट ट्यूब में।
समझे ना। सो इधर कहें ये फिल्ट्रेट बोल रहे हैं, इसमें लार्ज साइज्ड पार्टिकल से ऊपर ये चीज क्लास का ऊपर ये लार्ज साइज्ड पार्टिकल्स आर कॉल्ड क्या है, रेटेंटेट। समझे ना। क्या करना, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड टेस्ट में पहले वी कैन टेक एक लिविंग मैटर, either animal tissue or plant tissue. So that living matter put in a mortar and thoroughly grinding the matter with a pestle. Okay, by using of this pestle thoroughly grind karna. So then again add क्या है, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। ये याद रखिए फॉर्मूला CCl3COOH, ये इंपॉर्टेंट बिट में पूछने के लिए चांसेस है, ठीक है। ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड ऐड करने से अभी क्या फॉर्म करे, स्लरी। स्लरी मींस फ्रूट जूस जैसे फॉर्मेशन होता है। नाउ द स्लरी फिल्टर्ड थ्रू चीज क्लॉथ और कॉटन क्लॉथ, चीज क्लॉथ और कॉटन क्लॉथ यूज करके हम ये स्लरी क्या करना, फिल्टर करना। सो फिल्ट्रेशन में दो फ्रैक्शंस फॉर्मेशन होते हैं, वन इज फिल्ट्रेट, अनदर वन इज रिटेंटेट। फिल्ट्रेट मींस वो डिसॉल्व्ड पार्ट व्हिच इज collected by the baker, and retentate it is the non dissolved parts which are present on the cheese cloth or cotton cloth. So these are the two types of fractions, filtrate and retentate, ठीक है बेटा। So filtrate is the क्या है, acid soluble है, ये क्या है, acid soluble बोल रहे हैं। retentate is acid insoluble बोल रहे हैं, ठीक है। retentate क्या है, acid insoluble है, filtrate is acid soluble है। so filtrate किसमें है, इन बेकर। filtrate किसमें है, इन बेकर। retentate किधर है, on the cheese cloth, on the cheese cloth, ठीक है। सो एसिड सॉल्युबल में ये क्या है, कंटेन माइक्रोमॉलिक्यूल्स, माइक्रोमॉलिक्यूल्स। एसिड इनसॉल्युबल कंटेन मैक्रोमॉलिक्यूल्स, मैक्रोमॉलिक्यूल्स, ठीक है बेटा। सो एसिड सॉल्युबल मींस फिल्ट्रेट में क्या है, माइक्रोमॉलिक्यूल्स है। एसिड इनसॉल्युबल रिटेंटेट में क्या है, मैक्रोमॉलिक्यूल्स प्रेजेंट, ठीक है, क्लियर। So this is the TCA test, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड टेस्ट। फॉर्मूला क्या है, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड का फॉर्मूला CCl3COOH। okay, so how many fractions are formed, filtrate and retentate। retentate is the acid insoluble fraction and ये किसमें, on the cheese cloth में है, and it contains macromolecules, and filtrate acid soluble part है, so it is collected in beaker and contains micromolecules. So acid soluble molecules, macromolecules are known as biomicromolecules, acid insoluble molecules biomacromolecules, ठीक है। ये स्टेप्स याद रखिए वन बाय वन।
Clear? Okay. Next. So what are the micromolecules and what are the macromolecules in living matter? देखिए, micro and macromolecules. So next, biomicromolecules, molecules and biomacromolecules. Biomacromolecules. So biomicromolecules ये क्या है? एसिड सॉल्युबल, एसिड सॉल्युबल. ये क्या है? एसिड इनसॉल्युबल, एसिड इनसॉल्युबल. Biomicromolecules are the smaller in size, smaller in size. ये क्या है? Larger in size. ठीक है. Next, biomicromolecules have low molecular weight. Low molecular weight. So कितना ये low molecular weight? 8 to 800 और 1000 below होता है डाल्टन यूनिट्स में. 8 to 800 और 1000 DA. DA means डाल्टन यूनिट्स. ये क्या है? हाई मॉलिक्यूलर वेट. हाई मॉलिक्यूलर वेट. सो कितना है? 1000 to more than 10,000 Dalton units. More than 10,000 Dalton units. ठीक है. Next. So micromolecules are the simple structure. Simple structure. Macromolecules are the complex structure. Complex structure. ठीक है. Next. Form building blocks of compound molecules or macromolecules. Macromolecules. ठीक है. ये क्या है? Formed by polymerization of micromolecules. Micromolecules. ये क्या है? occur as a molecular solution. Molecular solution. Macromolecules कैसे है? colloidal solution जैसे. occur as colloidal solution.
कोलाइडल सॉल्यूशन. So macromolecule का example like minerals, monosaccharides, amino acids. So macromolecules में means acid insoluble में there are four types of macromolecules है like polysaccharides, proteins, lipids and nucleic acids. So these are the four types of biomacromolecules which are present in acid insoluble means retentate में. acid insoluble means क्या है ये वाला retentate. acid soluble means क्या है filtrate. So filtrate में minerals, monosaccharides में simple sugars, amino acids है. Macromolecules में four types of macromolecules: polysaccharides, proteins, lipids and nucleic acids. Disaccharides, okay, trisaccharides, except polysaccharides, the remaining all are बायोमाइक्रोमोलिक्यूल का अंदर आ रहा है. ठीक है, ठीक है बेटा. ओके, कल अनदर टेस्ट फॉर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए एस टेस्ट टुमारो विल बी टेस्ट. ठीक है. Class over. Time up. Good day.